Welcome to my channel Pakistani Hawkeye. We're taking a road trip from Islamabad to Lahore on the most famous motorway M2. ये 6 लेन का हाईवे है, मोटरवे है, and it has wonderful rest areas and food places etc. Most favorite part of the highway motorway for me is when we are entering the Salt Range. How does the Salt Range get its name? It is the remaining little mountains, hills from the Himalayan mountain range, और ये house करती है world's number 2 largest salt mines, Kevra. Because this road is carved from the mountain, in between the mountain, that's why you have to drive in a lower gear of the car. और यहाँ speed limit भी बहुत, सिर्फ 40 या 50 miles an hour की speed पे आप चला सकते हैं. So you drive in a lower gear. और जगह जगह यहाँ आप देखेंगे कि emergency climbs दी हुई हैं, क्योंकि यहाँ heavy माल बरदार trucks वगैरह भी travel करते हैं. And because of the high and low terrain, उनके brakes fail हो जाते हैं and they might need to climb up one of these emergency inclines. We're now going to enter the biggest rest area of Bhera. और यहाँ local food भी है, fast food chains भी हैं, और बहुत अच्छे paid साफ सुथरे toilets भी हैं for ladies and gents अलग अलग to use. And you can get gas from here, there's an ATM here. और फास्ट फूड्स के अलावा आपको दाल माश और नान भी मिलेगा खाने को. बेरा से निकल के हमने देखा कि यहाँ में बहुत सारे ब्रिक क्लिन्स हैं जो कि ट्रेडिशनल ब्रिक्स बनाते हैं, और इनकी वजह से लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉग पाई जाती है. इस हद तक कि सर्दियों में बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी हाईवेज आर यूजुअली शट एट नाइट. Finally, the city of Lahore. Lots of lights and fantastic shops and upscale dining areas. यहाँ हमने अलांतो पे डिनर किया और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ vintage looking floor and decor was excellent and the food was ज़बरदस्त too. और हम इतने भूखे हो रहे थे कि हमसे वेट भी ना हुआ गया to record the complete food that arrived. हमने अपने starters को record नहीं किया. We just dug right into it. After dinner, we made our way to Defence Raya, another upscale dining and shopping district where we had a complete downtown area with water fountains and cement orgs and high-end home decor stores and lots of fine dining restaurants, and of course supermarket for general grocery for the surrounding area people. It was just so beautiful, so serene, and it's very heartwarming to see that हमारे मुल्क में भी इतने अच्छे upscale districts बनने लगे हैं for people to come out in the evenings or on weekends and enjoy themselves with their family. An intihai safe and secure atmosphere. There was lots of local square police from Defence Raya, और उसके पीछे बहुत ही खूबसूरत राया का डिफेंस का golf course भी था, an 18-hole golf course that people can enjoy, the residents can enjoy the course as well as live inside.